Hello everyone, I am Dr. Richa from Physiology Open. In this video, we will talk about benzodiazepines. So, what are these benzodiazepines? Benzodiazepines are the drugs which are selective CNS depressants. देखो barbiturate are the drugs जो generalized CNS depressant करते हैं, डिप्रेशन करते हैं. बेंजोडाइजेपिन्स ऑन द अदर हैंड सेलेक्टिव सीएनएस डिप्रेशन करते हैं, यानी कुछ कुछ जगह पे सीएनएस डिप्रेशन करते हैं. ठीक है. सीएनएस डिप्रेशन मींस दैट दे विल डिक्रीज द एक्टिविटी इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है. तो हाउ डू दे डिक्रीज द एक्टिविटी? दैट इज बाय एक्टिंग ऑन दिस गाबा ए रिसेप्टर. ठीक है. तो याद रखो गाबा जो होता है दैट इज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज दिस गाबा ए रिसेप्टर, देन वी विल टॉक अबाउट हाउ बीजेटी एक्ट. ठीक है. तो गाबा रिसेप्टर्स, the GABA neurotransmitter receptors are actually of two types, GABA A and GABA B. We are interested here for GABA A. ठीक है. तो GABA A receptor ये बना है, इसके actually 5 subunits होते हैं. ठीक है. That is it's a protein, okay, like any other receptor, it's a protein and it is inserted in the membrane. तो यहाँ पे membrane होगा, ये receptor है और receptor है लेकिन ये actually channel है. Okay, तो यहाँ पे GABA can bind and then this channel will open. Now this channel has 5 subunits as I told. There are 2 alpha subunits, 2 beta subunits and 1 gamma और डेल्टा सब यूनिट. तो ये ब्लैक वाला वी कैन से दिस इज बीटा सब यूनिट, दिस ब्लू वन इज अल्फा सब यूनिट. तो यहाँ पे भी ये अल्फा और ये बीटा सब यूनिट हो गया एंड दिस रेड वन दिस इज गामा और डेल्टा सब यूनिट. नाउ दिस गाबा एक्चुअली बाइंड्स एट द जंक्शन बिटवीन अल्फा एंड बीटा सब यूनिट. ठीक है. यहाँ पे एक जंक्शन जो है यहाँ पे गाबा बाइंड करता है और सिंस देयर आर 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट, तो कितने जंक्शन होंगे? जंक्शन भी 2 होंगे. तो 2 साइट है वेयर गाबा कैन बाइंड. ठीक है. तो यहाँ गाबा बाइंड करता है बट दिस BZD द बेंजोडाइजेपिन कैन बाइंड एट द जंक्शन बिटवीन अल्फा एंड गामा सब यूनिट. तो यहाँ पे अल्फा और गामा सब यूनिट के बीच में जंक्शन है, इंटरफेस है, उसमें ये BZD बाइंड करता है बेंजोडाइजेपिन. ठीक है. जब गाबा बाइंड करता है तो ये चैनल खुल जाता है एंड दिस इज अ क्लोराइड चैनल एंड व्हेनेवर दिस चैनल ओपन्स देयर विल बी एंट्री ऑफ द क्लोराइड आयंस. नाउ दिस क्लोराइड एंट्री कॉजेस इनहिबिशन. हाउ? देखो ये न्यूरॉन्स हैं और न्यूरॉन्स में सिग्नल ट्रांसमिशन होना है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना है. जब भी सिग्नल इज कमिंग फ्रॉम वन न्यूरॉन एंड गोइंग टू अदर न्यूरॉन, there should be generation of action potential in the next neuron. तो अगर क्लोराइड एंट्री होगी, सपोज क्लोराइड इज एंटरिंग हियर, क्लोराइड इज अ नेगेटिव आयन एंड इफ इट एंटर्स इनटू द न्यूरॉन इट इज गोइंग टू डिक्रीज द पोटेंशियल इन द न्यूरॉन. ठीक है. पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो फिर क्या होगा कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं यहाँ से ये कम रिलीज होंगे. समझ में आ रहा है? तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन. प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन दैट मीन्स क्लोराइड एंट्री की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स विच आर गोइंग आउट फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन दे आर गोइंग टू डिक्रीज. सो दैट इज 1. Now this GABA can also act on the post-synaptic neuron. यहाँ पे भी इसके रिसेप्टर्स होंगे. तो जब यहाँ पे क्लोराइड चैनल खुलेगा तो यहाँ पे क्लोराइड एंट्री होगी और यहाँ पे भी जो पोटेंशियल चेंज हो रहा है इस न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से वो कम हो जाएगा. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जब पोटेंशियल चेंज कम हो जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेशन भी जो है कम हो जाएगा. समझ गए? So GABA can act on presynaptic neuron and also on postsynaptic neuron. Presynaptic neuron chloride entry causes decrease in the release of the neurotransmitter. Neurotransmitter कम रिलीज होगा और दूसरे में neurotransmitter जो भी रिलीज हुआ है it will act less. ठीक है. तो वो बाइंड किया जाके लेकिन यहाँ पे क्लोराइड चैनल खुल गया, उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेशन विल बी लेस. ठीक है. तो दैट इज द GABA एक्शन. Now, when BZDs bind, benzodiazepines bind on this GABA A chloride channel, then it acts as a GABA facilitatory. That means there will be increased frequency of opening of this chloride channel. ठीक है. Increased frequency important है ये कि ये GABA facilitatory है और increased frequency of opening of chloride channel होती है. मतलब
क्लोराइड चैनल पहले खुल रहे थे, बंद हो जाते, खुल रहे थे, बंद हो जाए, अब जल्दी जल्दी खुलेंगे, जल्दी बंद क्या मतलब क्लोराइड अंदर चला जाएगा, फिर वो बंद हो जाएंगे, उनका एक टाइम होता है, तो दे ओपन फास्ट एंड सो देयर इज इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल। ओके, तो इसका मतलब है गाबा फैसिलिटेटरी का मतलब है कि फॉर बेंजोडाइजेपिन्स टू एक्ट गाबा शुड बी प्रेजेंट, वो सिर्फ उसका एक्शन फैसिलिटेट करेगा, उसका एक्शन बढ़ा देगा। बेंजोडाइजेपिन्स का गाबा मिमेटिक एक्शन नहीं होता है, दैट मीन्स इफ गाबा is not present then benzodiazepines will not be able to act themselves। ठीक है, गाबा मिमेटिक एक्शन नहीं होता है, it is only GABA facilitatory action। That is why benzodiazepines are considerably safe drugs। टॉक्सिसिटी इनकी कम होती है, थोड़ी ज्यादा भी किसी ने डोज ले ली गलती से तो फिर उसको टॉक्सिसिटी होने के चांसेस कम होते हैं, बिकॉज इट हैज GABA facilitatory action। Now, this GABA A receptor also it has various subtypes। क्यों? Because ये जो अल्फा सब यूनिट यहाँ लिखा है ना, ये सब यूनिट भी इसके डिफरेंट सबटाइप्स होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2 ऐसे इसके सबटाइप्स होते हैं। तो ये GABA A रिसेप्टर भी जो है इसके सबटाइप्स होंगे, और इसी की वजह से benzodiazepines have selective action। That means this benzodiazepine sometimes act on GABA A receptors which have this alpha 1 subunit, sometimes they act on this alpha 2 subunit। तो फिर different types of GABA A chloride channel पे वो act करते हैं, जिसकी वजह से उनका selective action होता है। तो इसमें तुम्हारा alpha 1 subunit का याद रखो, it is responsible for HAMS। ठीक है, that is hypnotic, amnesic action and sedative। hypnotic sedative में this is alpha 1, alpha 2 is for anxiolytic and muscle relaxant। ठीक है, तो these actions जो यहाँ पे हम uses पढ़ेंगे, that is because benzodiazepines binding selectively to these kind of receptors। ठीक है, तो मैंने पहले बोला था it is having selective CNS depression action। Now, based on the duration of action, we have different types of benzodiazepines। What are these? So, ultra short acting benzodiazepines we have, that is the triazolam and midazolam। ठीक है, तो ये जो benzodiazepines, if you see their name, वो ऐसे zolam में generally they end in zolam। Okay, so ultra short acting is triazolam and midazolam, midazolam। और कैसे याद रखना है, देखो अल्ट्रा शॉर्ट लिखा है तो ट्रा इज कमिंग इन बिटवीन इन दिस वर्ड, तो ट्रा इज ट्राया एंड सिंस इट इज कमिंग इन मिडिल सो दैट इज मिडाजोलैम, ट्राइजोलैम एंड मिडाजोलैम। देन लॉन्ग एक्टिंग वी हैव फ्लोराजेपैम, फ्लोराजेपैम, नाइट्राजेपैम and diazepam। Okay, so these are long acting, and medium acting we have others, that is lorazepam, oxazepam, temazepam। ठीक है, so these are the various drugs which you should remember in ultra short acting, medium acting and long duration of action। क्यों? Why do we need to know this? Because based on the duration of action they are used for various uses। Okay, suppose if we want somebody who is not able to sleep properly, I mean he is just not able to initiate the sleep, एक बार वो सो जाता है then his sleep is maintained but वो सो नहीं पा रहा है, then we need a relatively medium acting like drug will be fine। short acting or medium acting drug we have to give, no need for the drug to act throughout the night। but if a person is having nocturnal awakenings, that means सो जाता है और बीच में रात में बार बार उठता है, तो we want a drug which acts throughout the night and then we have to give long acting drugs। Understanding? So that's why we have different types of benzodiazepines, and these benzodiazepines also in different uses they act like different benzodiazepines we use। Why? Again because they are selective CNS depressants और वो different GABA types पे act करते हैं। Now before we go into the uses, some other characteristics we have to see। First, benzodiazepines which are not metabolized in the liver। तो not metabolized in the liver के लिए याद रखो lot। ओके, कैसे? not in liver it is lot। ठीक है, so what are the drugs? lorazepam, oxazepam, temazepam and triazolam। So these drugs are not metabolized in the liver
And why it is important? That means these drugs can be given in liver failure. These drugs can be given in elderly also. And since these drugs are not metabolized in the liver, they do not have any active metabolite. Okay, direct उनका conjugation हो जाता है, directly they are excreted. इनका कोई active metabolite नहीं होता है, इसकी वजह से ये शॉर्टर ड्यूरेशन इनका एक्शन भी होता है. ठीक है, सो वी हैव लोराज़ेपैम, ऑक्साज़ेपैम, टेमाज़ेपैम एंड ट्रायाज़ोलैम. लॉट डबल टी आएगा. ठीक है, नाउ बेंजोडाइजेपिन हैव अनदर कैरेक्टरिस्टिक दैट इज ऑफ टॉलरेंस. टॉलरेंस हो जाता है इनका स्पेशली ऑफ द एक्शन ऑफ एंटी कन्वल्सेंट और सेडेटिव एक्शन का. ठीक है, तो दैट मीन्स इफ दे आर टेकन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, देन आफ्टर सम टाइम ये जो इसके एक्शंस हैं वो बंद हो जाएंगे. पर्सन विल गेट अडेप्टेड, टॉलरेंस हो जाएगा उसका अगर बेंजोडाइजेपिन्स को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए दिया जाए. दैट इज वाई बेंजोडाइजेपिन्स आर जनरली नॉट गिवन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, क्योंकि उनका टॉलरेंस हो जाएगा. स्पेशली एंटी कन्वल्सेंट. सी, एंटी कन्वल्सेंट मीन्स इफ उसका टॉलरेंस हो गया, now the person will be again susceptible to having the seizures. Okay, तो anticonvulsant वही करता है कि that means the seizures are going to decrease. वो डिप्रेशन करा देगा CNS का, ब्रेन का न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी कम कर रहा है, इसकी वजह से it is acting as anticonvulsant medication. तो टॉलरेंस उसका हो जाएगा. that is why benzodiazepines are not given for long duration. ठीक है, now moving on to uses कहाँ है? Anywhere where we need to depress the central nervous system, we are having its uses. So it is an anti-anxiety drug, decrease the anxiety. It is hypnotic, that means it will induce sleep or maintain sleep. Anti-convulsant, that is for seizures it is given. It also acts as muscle relaxant. Then it is used as pre-anesthetic medication and also used for alcohol withdrawal phenomena. ठीक है, तो इसमें समथिंग्स वी नीड टू रिमेम्बर. तो एंटी एंजाइटी के लिए वी हैव टू गिव सर्टेन ड्रग्स. नॉट ऑल ड्रग्स आर एंटी एंजाइटी. रिमेम्बर अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, बेंजोडाइजेपिन्स आर CNS depressant, selective CNS depressant. Okay, so there are certain drugs which act as anti-anxiety, there are certain drugs which act as anti-convulsant. तो anti-convulsant के लिए 4 drugs हैं, इसमें 2 drugs बहुत important है. Okay, so anti-convulsant के लिए we have lorazepam, diazepam, clonazepam and clobazam. Okay, lorazepam, diazepam, clonazepam and clobazam. ठीक है, सो दीज आर एंटी कन्वल्सेंट्स. इसके लिए तुम्हें 2 ड्रग्स मेन याद रखने हैं, दैट इज लोराज़ेपैम एंड डायज़ेपैम. ठीक है, लोराज़ेपैम इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस. दैट मीन्स सीजर्स के कंटिन्यूअस अटैक आ रहे हैं, कंटिन्यूअस सीजर्स हो रहे हैं एंड द पर्सन इज नॉट गेनिंग कॉन्शियसनेस इन बिटवीन. एक बार सीजर खत्म हो गया तो द पर्सन शुड गेन कॉन्शियसनेस, लेकिन अगर कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ सीजर्स में जा रहा है विदाउट गेनिंग कॉन्शियसनेस, देन वी नीड टू गिव लोराज़ेपैम IV, दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस. तो देखो यहाँ पे आई एम नॉट टेलिंग दैट इट इज यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग द सीजर्स, इट इज यूज्ड फॉर शॉर्ट टाइम ओनली. क्यों? बिकॉज टॉलरेंस डेवलप हो जाता है. तो याद रखना, एंटी कन्वल्सेंट IV फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस वी गिव IV लोराज़ेपैम. देन डायज़ेपैम इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फेब्राइल सीजर्स इन चिल्ड्रन. ओके, फेब्राइल सीजर्स में देते हैं और पर रेक्टली देते हैं. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज पर रेक्टली. ठीक है, सो 2 ड्रग्स लोराज़ेपैम एंड डायज़ेपैम. फिर हिप्नोटिक तुम्हारा आ गया, मैंने कहा था इधर स्लीप इंडक्शन और स्लीप मेंटेनेंस. स्लीप मेंटेनेंस के लिए वी हैव टू यूज लॉन्ग ड्यूरेशन ड्रग्स. कौन से ड्रग्स यूज करेंगे? फ्लोराज़ेपैम, नाइट्राज़ेपैम, दैट इज द लॉन्ग ड्यूरेशन. और स्लीप इंडक्शन के लिए वी विल यूज सम शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, अल्प्राज़ोलैम, वेरी कॉमनली यूज ड्रग अल्प्राज़ोलैम. ओके, ऑक्साज़ेपैम is the one which is used in elderly. ठीक है, elderly के लिए ऑक्साज़ेपैम, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ऑक्साज़ेपैम है, it is not metabolized in liver and I told you that drugs which are not metabolized in the liver can be used in elderly. एंटी-एंजाइटी के लिए डायज़ेपैम. ठीक है, लोराज़ेपैम, ऑक्साज़ेपैम एंड अल्प्राज़ोलैम. ओके, तो ये तुम्हारे ये वाले और डायज़ेपैम.
अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग नहीं यूज हो रहा है एंजाइटी के लिए, क्योंकि एंजाइटी विल लास्ट लिटिल लॉन्गर ड्यूरेशन. नो, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग वी कैन नॉट यूज. दीज लॉन्ग एक्टिंग वंस आल्सो नॉट यूज, दीज आर वेरी लॉन्ग एक्टिंग. तो ये वाले ड्रग्स. और डायजेपम, डायजेपम इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग. डायजेपम जो है वो इतना सेलेक्टिव नहीं है, वो क्योंकि हर टाइप के गाबा ए रिसेप्टर पे एक्ट करता है. तो इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम बेंजोडायजेपिन which has all these actions. Okay, तो डायजेपम we can give anywhere. फाइन. तो एंजाइटी के लिए ये ड्रग्स याद रखो. इसमें भी रिमेंबर दैट ऑक्साजेपम इज द वन विच इज प्रेफर्ड इन एल्डरली. ओके, क्योंकि ये जो लोराजेपम है, लोराजेपम हैज क्वाइट मच सेडेटिव एक्शन. अगर तुम एल्डरली में सेडेटिव एक्शन के ड्रग ज्यादा दे दोगे, देन द पर्सन विल फील ड्राउजी अ लॉट, एंड इन एल्डरली देयर इज चांसेस ऑफ अदर इफेक्ट्स एज वेल, क्योंकि इफ दे आर नॉट एबल टू मैनेज देमसेल्फ फुल टाइम दे आर सेडेटिव, देयर माइट बी टेंडेंसी टू फॉल आल्सो. ओके, तो लोराजेपम हैज सेडेटिव एंजाइटी, एंटी एंजाइटी एक्शन. ठीक है, तो वी डोंट गिव इन एल्डरली. ऑक्साजेपम वी गिव इन elderly. तो बेसिकली अभी तक we have seen two drugs in all. Fundamentally for anxiety, oxazepam in elderly, alprax very commonly used. Hypnotic में for sleep maintenance we have florazepam and nitrazepam, and for sleep induction we have alprazolam. Anticonvulsant के लिए for IV drug of choice status epilepticus lorazepam, और diazepam drug of choice for febrile seizures in children. ठीक है, muscle relaxant diazepam. Okay, now this is for muscle spasms or spasticity, not used for anesthetic muscle spasm. For that we will need neuromuscular blockers. Okay, उतना action नहीं होता है that we can perform surgery with this, but it is used for muscle spasms. Okay, then comes a pre-anesthetic anesthesia. Pre-anesthetic medication, it is used as pre-anesthetic medication or for anesthesia for small procedures, क्योंकि for short term it can be used and the person will not even remember. क्योंकि देखो यहाँ पे दिखा है ना amnesic action. Amnesia, generally we want the person to have loss of memory. Amnesia is what? It is loss of memory. तो generally नहीं चाहिए, लेकिन when we are doing some procedure like cardiac catheterization and endoscopy for setting of the fracture, for that a very short duration action we need, and the person should become amnesic. He should not remember that traumatic experience. Okay, so that time also these can be given, and for these triazolam and midazolam. Midazolam, no, it is commonly used drug for this. Then also it can be used for alcohol withdrawal. देखो alcohol, what it is doing normally when the person is consuming alcohol, it is causing long term like CNS depression. Okay, so when there is continuous CNS depression, now because our brain knows, okay, there is so much CNS depression, it increases stimulatory action. There is increase in the excitatory neurotransmitters. So when there is alcohol withdrawal, we need some amount of CNS depression to be maintained. Otherwise, the person will have anxiety, panic attacks, everything. Okay, so that is alcohol withdrawal. In fact, we will see that in benzodiazepines withdrawal also we have such kind of features. Okay, so for alcohol withdrawal, for maintaining during that time, we can give benzodiazepines. Okay, so those are the uses of the benzodiazepines. Now coming to side effects and toxicity. So side effects are related to its actions as well. ज़्यादा CNS depression हो जाएगा, so that we will get side effects. So क्या होंगे side effects? Drowsiness. The person is like always drowsy. Then dizziness, muscle incoordination. ठीक है, तो person while on benzodiazepine should not drive. Okay, otherwise the person may cause an accident, right? Then toxicity. If there is too much CNS depression, it can cause toxicity. तो तुम्हारा सब चीज का depression हो जाएगा. There will be respiratory depression, there will be cardiovascular depression, obviously CNS depression, so it is causing. So when that is too much, then that is toxicity. Respiratory depression will be seen as decrease in respiratory rate. Cardiovascular depression will be seen as decrease in heart rate, decrease in blood pressure, that is hypertension. And CNS depression will be seen as the person will be incoordinated, there will be slurred speech, he is not able to talk properly, okay, altered mental status. So that is CNS depression. So these are the signs of toxicity, and fortunately we have a drug which can reverse this toxicity, that is flumazenil.
flumazenil. Okay, so as flumazenil is given, within seconds the person starts responding, and within 5 minutes the person will be out of this toxicity. Okay, so flumazenil is given IV for benzodiazepine toxicity. Then withdrawal. That means when the person is taking these benzodiazepines and then he stops suddenly, then there can be withdrawal symptoms. Withdrawal symptoms will happen like the person can have regain his anxiety, he will not be able to sleep. So that is mild withdrawal symptoms. Other withdrawal symptoms can occur. He can have a panic attack, he can be agitated, and in very severe cases he can also get seizures. Even if the person was not a patient of seizures, he was not having any seizures before, but because of these withdrawal from benzodiazepines he can have seizures. And again, what is the mechanism of action? Because the person has been taking benzodiazepines for long time, तो जो GABA है, जो GABA का action है, that is prolonged. So what body does? It compensates. और compensate कैसे करेगा? By increasing the excitation of the CNS. ठीक है, अब excitation CNS ने कर दिया है. Now you remove the benzodiazepines, GABA action will be less. तो क्या बचा? It is excessive excitation in the brain. तो person will have lot of excitation in the brain, due to which there will be anxiety. The person will not be able to sleep. बहुत ज़्यादा excitation है brain का, then how will the person will be able to sleep? And if it is too much, there can be seizures. Okay, so that is the withdrawal symptoms of benzodiazepines, and this generally happens with short acting drugs, ultra short acting, medium acting. In fact, with the alprazolam, if the person has taken for long time, then withdrawal symptoms are common. Okay, तो इसके लिए क्या करना है? We have to stop benzodiazepines slowly. तो in fact जो tablet है, we have to little approximately 5%, 10% we have to cut down the tablet over time, so as to prevent this withdrawal symptom. Okay, now final thing that I talked about the side effects. Just remember that here hypnotics, we said that for sleep maintenance we have florazepam and nitrazepam. They are long acting, so night में they decrease the nocturnal awakenings. The person can sleep continuously with florazepam and nitrazepam. लेकिन इनका paradoxically they increase the nightmares. Okay, so the person is taking, but he may have nightmares, right? So that was all about benzodiazepines. Thanks for watching the video. If you liked it, do press the like button, do share the video with others, and don't forget to subscribe to the channel Physiology Open. Thank you.